Hello, welcome all the viewers, Nazreen और सामाईन. Assalamu alaikum आप सबको मेरी तरफ से. I hope that I'm audible. I will just confirm. If I can just get a confirmation that I'm audible, then we will just proceed. Yes, you are. Okay. So आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद मेरी जानिब से. मेरा नाम इसरा हफीज़ है. I'm working as a hospital pharmacist in Fakir University Hospital. प्रोग्राम का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. So जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि I will be moderating this session which is on diabetes, its awareness and the alternative pathway that we have for diabetes management. And why diabetes? This, as you know, is the second series of the volunteer organization giving back to pharmacists in Pakistan, which is an organization where global pharmacists are sharing their practices to contribute to the pharmacists in Pakistan. It is actually a collaboration with Nurturing Pharmacy Community in Pakistan, as you know, and this series is a second series where we present different topics for awareness, for sharing best practices with the pharmacists in Pakistan so as to empower them. And hopefully you have been gaining well through all our sessions. And diabetes, as you know, as per World Health Organization, is celebrated to improve its awareness on 14th of November each year. And it is treatable, it is curable, it is treatable if you have the right awareness and right information about this disease. So as you know that I'm moderating this session, I'll present to you the speaker of our session today, which is Dr. Sana Sarfaraz. Dr. Sana Sarfaraz is a doctorate. हमारी काबिल कदर speaker जो है, she is a doctorate in pharmacology from University of Karachi, and she has done his from University of Karachi, and she has done 2 years of experience as a community pharmacist from Aga Khan University Hospital, and 7 years of experience in she's currently working as an assistant professor in Aga Khan University Hospital. Not only she has this experience, she is contributing to community and clinical clerkships as well. She's a student advisor as well. And she is in a lot of postgraduate teachings. She has contributed numerous research papers and articles. And today our session will be led by Dr. Sana Sarfaraz. I will let her share her screen, and then we will proceed towards our question answer session. And you can always send your questions to the right side of your screen in our chat room, and then we will take your questions one by one. Thank you. Thank you, Ms. Dr. Sana Sarfaraz. You can just commence with your presentation. Assalamu alaikum, everyone, and thank you, Isra, for the great introduction. This is a very good step which has been taken by giving back to pharmacy in Pakistan to create awareness in the general population, as well as to further educate the pharmacists and the undergrads, especially who are studying. And this time, Nurturing Community Pharmacy in Pakistan is also collaborating for this particular lecture. So before starting my topic, a lot has been talked about diabetes, and I think people are already aware about what are the implications and the complications associated with diabetes. But why still are we talking about diabetes is the question that arises. Current data suggests that around 422 million people worldwide are still suffering from diabetes, and the rate is expected to increase in the coming years. So that is why I believe diabetes is one of the chronic conditions that we need to focus on if we want to avoid, its level increasing in the upcoming years. I'll try talking bilingually because audience दोनों होंगे, तो अगर सबको समझ आए तो एक बहुत अच्छी चीज रहेगी. I'll tell why I used the word alternative approach in the last treatment protocol when we'll go towards that.
I'll begin with the topics that we'll cover. We'll just go through quickly that what is diabetes, what are the common types that we know, थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी के क्यों होती है, क्या सिम्टम्स कॉमन होते हैं, रिस्क फैक्टर्स कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, एंड देन द फोकस व्हिच इज the non-pharmacological parameters, I believe, जिसके through we can overcome the current scenario that we are facing. Pharmacological treatment, I believe everyone is aware, but हम उसको थोड़ा सा touch कर लेंगे. And then the alternative treatment on which currently a lot of people are working, and in Pakistan nowadays also, that treatment is being focused on from the academia side, and it's also being collaborated with the clinicians, which I believe is a very good thing. So according to the World Health Organization, what is basically diabetes? Diabetes is a chronic metabolic disease which is characterized by elevated levels of blood glucose. हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज को आपस में कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे भी कर रहे होते हैं और वैसे लोग भी कर रहे होते हैं. सो बेसिकली यू नो इफ समबडी ईट्स समथिंग, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. आपके घर किसी की शादी है या कोई अच्छी खुशी की खबर है आई है, whatever good news you have, and you eat 4 or 5 gulab jamuns instead of just having one, and then you go and you check your blood glucose, so definitely it will be elevated, but that elevation does not mean that you have diabetes, right? Diabetes is basically when consistently your blood glucose level is staying elevated, and besides that the symptoms the symptoms which we'll be discussing अभी थोड़ी देर में आगे, you are facing those symptoms. ठीक है, तो ये चीज बड़ी important है when you say that somebody is diabetic, that that is a chronic hyperglycemia that the person is facing, and because of that the carbohydrate pathway, the protein pathway, the lipid pathway, everything is getting affected. And then definitely क्योंकि chronic हम बार बार कह रहे हैं तो long term है, अब आपको अगर 30 से हुई तो जितनी देर तक आप जिंदा हैं आपको है, या अगर आपको उससे भी जल्दी हो गई, which unfortunately has now started. First, we used to predict that, late 40s, 50s, but now in 30s, 35s, we see diabetic population type 2. So then definitely your heart gets compromised, your eyes might get compromised. The two more things that we need to focus on are the heart and the kidneys, because these are interrelated. So ये दो चीजें जो complications में हैं वो common आती हैं. Then a quick glance at the etiological classification according to the cause. That is usually insulin-dependent diabetes, everybody know, which is type 1, and type 2, which is the independent diabetes, and the gestational diabetes, which usually occurs in the pregnancy. Then depending, whether the precaution was taken, whether, how the diet was maintained, how the therapy was initiated, it might be resolved, or it might get converted into type 2 diabetes mellitus. So usually, in type 1, we are saying that, the beta cell destruction is there, and it might be idiopathic, the cause might not be known, might be any environmental factors se ho sakta hai, might be possible that genetic cause ho sakta hai, or it might be immune modulated. We know that it is an autoimmune disorder. The body itself is producing cells to, kill the beta cells in the body. And type 2 is usually associated with insulin resistance. The most common cause in our society in females is usually obesity and sedentary lifestyle, जो कि both populations में आपके पास आ सकता है. Males के अंदर smoking is one of the major risk factors that we usually see, right? So when we talk about the pathophysiology, a quick सिर्फ छोटा सा chart आपको दिखाने के लिए कि when we talk about the antigens, definitely they are going to act on the T helper cells, cause their activation, cause the release of cytokine, particularly the interleukin 2, and we are saying the interferon gamma are involved, but interleukin 1, interleukin 6, interleukin 18, all the family of interleukins mainly, ये सारी involved होती हैं. And then definitely when you're saying that the inflammation cascade has been activated, so the inflammation cascade will progressively, lead towards the cell death or apoptosis. And then that will definitely cause the type 1 diabetes mellitus. इसलिए type 1 की treatment में अगर ये चीज़ मेरे ख्याल से पता ही सबको होगी कि insulin देना ज़रूरी होती है. It is necessary to give insulin in the treatment. And when we talk about type 2 diabetes, in type 2 diabetes, as I said, it can be any genetic factors, or mostly be associated with obesity. So it can lead to, the insulin resistance, or it can also cause the
beta cell defect, but it will derange the insulin secretion as compared to inhibiting it or completely damaging the beta cells. So that is why some insulin is there, and then that leads to inadequate glucose utilization, which will ultimately result in hyperglycemia and the beta cells will get exhausted. इसलिए आप देखेंगे कि type 2 diabetes भी, if not properly managed or maintained, 10 years, 12 years, the insulin is usually then added in the regime, in the treatment regime to treat the type 2 diabetes. Before going to this, I just would like to pinpoint एक छोटे से differences between type 1 and type 2. Usually हम obesity या overweight को associate कर रहे होते हैं type 2 से. Usually age limit, middle age और ये सारी above that type 2. In type 1 usually younger ages आपके पास होते हैं. BMI जो आपका body mass index होता है वो usually type 1 में normal होता है, जबकि type 2 में आपके पास usually compromised हो रही होती है. Waist circumference usually it increases for males and females both. So usually उसके अंदर आपके पास उसको भी हम in consideration ला रहे होते हैं. But the diabetic ketoacidosis or the diabetic coma is more common in type 1 as compared to type 2. And definitely I have said that symptom wise जो symptoms foreign appear हो रहे होते हैं या rapid appearance होती है वो type 1 में होती है as compared to type 2 diabetes. So these are some of the differences in which you can compare. And क्योंकि type 1 में as such liver इतना compromise आपके पास नहीं होता, तो fatty liver की appearance आपके पास type 2 में आ रही है as compared to type 1. Why I have written the effects of the insulin deficiency, because all of these are getting compromised. तो इसके basis पे जो आपके पास symptoms की appearance हो रही होती है वो इस वजह से हो रही होती है. For example, in the adipose tissue, we know that the glucose uptake is being regulated by insulin. We know that the lipogenesis is being regulated by the insulin. We know lipolysis यानी कि जो fat का breakdown होता है वो कम हो रहा होता है insulin की वजह से. But when we talk about that there is deficiency of insulin, तो सब कुछ उल्टा होने लग जाता है, ठीक है? यानी कि fatty acids का breakdown बढ़ जाता है, lipogenesis कम हो जाता है, triglyceride की production बढ़ जाती है. That will definitely lead to hypertriglyceridemia, यानी कि आप अपने body के fats को compromise कर रहे हैं. So definitely you are progressing towards cardiovascular disorders as well, जब भी आपके पास सारा dysregulate हो रहा है. Similarly, if you are saying that you're talking about glucose when you're talking about with respect to liver, so usually gluconeogenesis जो है वो आपके पास जो है वो कम हो रहा होता है, glycogen synthesis बढ़ रही होती है, lipogenesis बढ़ रही होती है liver side पे भी. But then again, when the insulin is deficient, then again the uptake of glucose by the tissues in the adipose tissue, liver, muscle is decreasing, and there's overproduction of glucose by glycogenolysis and glyconeogenesis. So definitely the hyperglycemia is there. And similarly, when there is insulin deficiency, protein भी आपके पास जो है वो diminished uptake होती है और diminished synthesis होती है. तो definitely elevated blood urea nitrogen आपके पास आता है, potassium level increase होता है. तो अगर आप एक picture को देख लें यहीं पे, तो you are seeing that जो भी आपकी पूरी body के metabolic processes हैं वो सारे आपके पास compromise होने लग गए हैं, ठीक है? यानी कि diabetes is not only influencing the glucose, diabetes is also influencing the other parameters of your body as well, which are necessary for the metabolism. So अगर हम बात करें कि अब क्या symptoms या signs आ रहे होते हैं जिसको देखकर आपको अपना blood sugar level को check कराना चाहिए या आपको उसको monitor करना चाहिए. Definitely I would recommend this कि अगर 30 years cross कर लिया है, मेरे हिसाब से 28 से ही अगर आप एक दफ़ा करा लें चेक तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 30 years जैसे ही आपने क्रॉस किया या 30 पे आपकी 30th बर्थडे है तो केक वगैरह काट के और ये सब करके थोड़ा सा अगर you go towards the profiles, तो आप अगर अपनी एक पूरी प्रोफाइल करा लें, लिपिड प्रोफाइल करा लें, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा लें, सो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि अगर फैमिली की हिस्ट्री है तो आपको ये पता चल जाएगा कि वेयर यू आर लाइंग इन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, राइट? सो दैट वुड बी डेफिनेटली वेरी गुड फॉर यू एज वेल. यूजुअली जो सिम्टम्स आपके पास मोस्ट कॉमन आ रहे होते हैं वो हम पीज 3 पीज को एसोसिएट कर रहे होते हैं. पी से तीनों पी हैं, तो पी क्यूब कर सकते हैं आप याद रखने के लिए. पॉलीयूरिया यानी कि यूरिनेशन ज्यादा आती है, वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है. पॉलीडिप्सिया विच इज एक्सेसिव फ्लूइड क्रेविंग, पानी बार बार प्यास लगती है.
और food craving आपको ज़्यादा होती है, which is polyphagia. So these are usually the 3 P's that are associated. Then weight loss or underweight आपके पास usually type 1 के अंदर आता है, और weight usually gain हो रहा होता है specifically around the waist, as I said, in type 2. पेशेंट में फील खा के भी ऐसा लग रहा होता है कि फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं, और एनर्जी इतनी नहीं बॉडी के अंदर फील हो रही होती. Then another thing that might happen is the urinary tract infections are more prevalent, particularly in the female population, and पाँव में tingling जैसी sensations feel होना start हो जाती हैं. That also occurs that if you are vitamin deficient, but with all these symptoms, if they are occurring in the foot area, so definitely they are associated with diabetes. Then usually you see that if you get a cut or a wound, the healing time takes it takes more time to heal. Wound को सही होने में देर लगती है as compared to normal, जैसे पहले होता था उससे ज़्यादा देर लगना स्टार्ट हो जाती है. So that basically also shows that आपको चेक करा लेना चाहिए अपना शुगर लेवल. सो यूजुअली याद रखने की चीज़ है एक्सेसिव यूरिनेशन, excessive fluid intake, and excessive hunger, which is even when you're consuming, you're still feeling fatigued and drawn out. Usually this was a very good pocket guide to have a look that these are the symptoms that are being felt. So अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो you should go for the checkup. पॉजिटिव रिस्क फैक्टर मीन्स कि ऐसी चीजें जो आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं जो कि प्रमोट करा सकती हैं डायबिटीज को. ठीक है, तो अगर आपकी जिंदगी में ये चीजें हैं तो आपको अपनी शुगर लेवल की स्क्रीनिंग या प्री डायबिटिक स्क्रीनिंग हम उसे कहते हैं वो करा लेनी चाहिए. नेगेटिव रिस्क फैक्टर वो होता है कि अगर आपका ऐसी चीज आपकी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक हेल्थी लाइफस्टाइल है तो आपका ये नेगेटिव रिस्क फैक्टर होगा. दैट मीन्स दैट यू आर नॉट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग लाइफस्टाइल बिकॉज फॉर डेवलपिंग डायबिटीज बिकॉज यू हैव अ हेल्थी लाइफस्टाइल. सो आपका अगर HDL लेवल अच्छा आ रहा है या HDL लेवल आपका इंक्रीज्ड है तो दैट इज शोइंग दैट यू हैव अ नेगेटिव रिस्क फैक्टर. पॉजिटिव रिस्क फैक्टर्स में यूजुअली सबसे पहले मैंने अभी हाईलाइट भी किया है, फैमिली हिस्ट्री होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि आपका ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, बैठने की हो सकता है जॉब हो, या कंप्यूटर पे जैसे ज़्यादातर बैठ के बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, इस तरह का लाइफस्टाइल है जिसमें एक्सरसाइज नहीं है, मूवमेंट नहीं है. ओबेसिटी है सबसे ज़्यादा, मैंने भी हाईलाइट भी किया, टाइप 2 में ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेन रीजंस. और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ है, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है, तो भी मैंने आपको पूरी साइकिल में इसलिए दिखाने की कोशिश की थी कि मेटाबॉलिक में आपका सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, प्रोटीन और फैट्स भी आपके हो रहे हैं. तो इस वजह से वो पूरा ओवरऑल आपका यानी कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड है. तो उसमें ये चीज़ देखने की बड़ी ज़रूरत है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मैनेज रहे, वरना फिर वो दिल की तरफ लेके जाएगा, दिल की बीमारी की तरफ. Then hypertension, definitely it is again correlated, or it can cause diabetes because there are factors that are very much interlinked in that as well. और सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि नाइकोटिन से भी आपके पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या वैस्कुलर डैमेज, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि अगेन जो अभी हमने एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड पढ़ी थी उसके साथ इंटर रिलेटेड होती हैं. तो इस वजह से आपके पास जो है वो दिस कैन ट्रिगर. प्लस नाइकोटिन ऑल्सो अफेक्ट्स द इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल को भी एलिवेट करता है. तो फिर स्मोकिंग जो है वो यूजुअली, वैसे तो आप देखें तो स्मोकिंग ज़्यादातर क्रॉनिक बीमारियों के अंदर सबसे पहले जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि क्विट स्मोकिंग, या एटलीस्ट अगर आप 16 सिगरेट एक दिन में पी रहे हैं तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए, 10 पे ना, फिर ग्रेजुअली उसको क्विट करने की कोशिश करें. सो मेजर कॉम्प्लिकेशंस और द ऑर्गन्स दैट आर कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोवैस्कुलर है और मैक्रोवैस्कुलर है. माइक्रो में आपके पास आई आता है, यू हैव द न्यूरोपैथी, जैसे मैंने आपको बताया है कि पिन एंड प्रिक सेंसेशंस वगैरह आपको फील होने लग जाती हैं. किडनी का मसला कॉम्प्लिकेट ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज किडनी इज़ द फिल्टरिंग यूनिट. तो अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो फिर डायबिटीज़ के साथ किडनी कॉम्प्रोमाइज होना मतलब कि एक खतरे के बजाय 2 खतरे इकट्ठे आपने मोल ले लिए. तो अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो फिर अल्टीमेटली तीसरा खतरा आपका दिल की तरफ जाएगा. सो किडनी एक बहुत बेसिक ऑर्गन है वर्किंग का. सो इफ एंड यूजुअली डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होती है, मैंने पहले भी हाईलाइट किया, वो हार्ट और किडनी के ऊपर ही ज़्यादा जा रही होती है. So these two need to be monitored very well, and that can be done with proper healthy lifestyle. अगर आपका स्टेज जो है वो कम है, और अगर स्टेज प्रोग्रेस हुआ है तो फिर अगेन यू नीड टू मॉनिटर योर लेवल्स ताकि जो है वो मसला कम से कम.
अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लेवल्स दिए हैं कि नॉर्मल शुगर लेवल इतना होना चाहिए, खाने के बाद लेवल इतना होना चाहिए। और ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बात भी की है कि अगर आपने 30 क्रॉस कर लिया तो एक दो दफ़ा, मतलब 3 महीने में एक दफ़ा या 6 महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा, या अगर कोई खुदा ना खास्ता सिम्टम अपीयर हो रहा है तो फिर तो आप चेक करा लें तो अच्छा ही है। बट you should monitor these things. So the normal blood sugar level usually fasting में, यानी कि कुछ खाए पिए बगैर ओवरनाइट आपने अगर फास्ट किया हुआ तो सुबह सबसे पहले जो आपने चेक कराया अपना खून, उसमें अगर 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका शुगर लेवल आ रहा है तो दैट इज शोइंग इट इज विद इन द नॉर्मल रेंज, नो इश्यूज। अगर उससे कम आ रहा है तो यूजुअली फीमेल्स में ऐसा होता है क्योंकि वो लोग नाश्ता लेट करते हैं या नाश्ता नहीं करते, सिर्फ चाय पी ली, इस तरह की चीज़ें कर ली, तो यूजुअली फास्टिंग में उनका कभी कभी कम भी आ रहा होता है। और वो मतलब थोड़ा सा वो फिर उनको कह रहे होते हैं कि हेल्थी डाइट मेंटेन रखें ताकि जो है वो नॉर्मल आपका रहे। और अगर लेस देन 50 डेफिनेटली जाता है तो फिर वो इंसुलिन शॉक के अंदर चला जाता है। प्री डायबिटीज का जो लेवल है दैट इज 110 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये यूजुअली आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि इफ यू मैनेज योर लाइफस्टाइल एट दिस स्टेज तो आप जो है वो सही हो जाएंगे, देन गेट बैक टुवर्ड्स नॉर्मल चले जाएंगे। एंड इफ यू इग्नोर द वार्निंग साइंस, ठीक है, वो जो लाल बत्ती जलती है ना, अगर उसको आप इग्नोर करें तो उसके बाद तो डेफिनेटली अगर आप क्रॉस कर लें तो पता ना खासा एक्सीडेंट के रिस्क वगैरह आपके पास आ जाता है। तो इसी तरह से जब ये प्री डायबिटिक होता है तो ये एक बॉर्डर लाइन है जो आपकी बॉडी आपको एक रेड हाईलाइट दे रही है, रेड लाइट दे रही है कि देख लें, बचत करने की कोई कोशिश कर लें। सो इफ यू डू इट, और इस स्टेज पे अगर आप एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं और डाइटरी मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो बैक टूवर्ड्स योर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज शुगर। और अगर नहीं खुदा ना खास्ता हो पाती तो देन डेफिनेटली द डायबिटीज मेलाइटिस विल बी देयर इफ द शुगर इज इंक्रीजिंग। यूजुअली 126 से अबव हम कह रहे होते हैं फास्टिंग ब्लड को। और डेफिनेटली मैंने कहा कि एक ही दफ़ा अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अगर आपने कुछ खाया और एक ही दफ़ा आपने लिया और आपने कहा डायबिटीज़ हो गया, ऐसा नहीं होता। उसको आप मल्टीपल टाइम्स मॉनिटर करके विद दी साइंस एंड सिम्टम्स देख रहे होते हैं और फिर आप इसको जो है वो क्लासिफाई से कर रहे होते हैं। सिमिलरली 2 घंटे खाने के बाद अगर आपके पास लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो नॉर्मल है, 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो अगेन वो बॉर्डर लाइन वाली चीज है। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 200 देन यू हैव समथिंग टू वरी अबाउट। और इसी को लेके बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि फर्ज कीजिए इट इज नॉट नेसेसरी कि दे आर डायबिटिक but they have hypertension or they have some other cardiovascular disease, और हो सकता है कोई किडनी डिजीज भी हो सकती है उनको, और उनको इस तरह के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स एज आप फर्ज कीजिए किसी की शुगर 300 आ रही है, 400 आ रही है, 500 आ रही है, तो HbA1c करा के भी डॉक्टर्स जो है वो लेवल चेक कर रहे होते हैं। एंड यूजुअली ग्रेटर देन 6.5 से ऊपर, यूजुअली अगर जैसे 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 तक आता है तो फिर डेफिनेटली इंसुलिन टाइप 2 के अंदर भी इनकॉर्पोरेट बहुत सारे डॉक्टर्स कर देते हैं, वरना मेटफॉर्मिन या जो भी ट्रीटमेंट चल रही होती है उसको हायर वेट पे लेके जाते हैं ताकि HbA1c नीचे आपका मॉनिटर हो जाए, कंट्रोल हो जाए, बेहतरी की तरफ आ जाए। सो यूजुअली HbA1c वैसे हम जब करवा रहे होते हैं डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट 3 मंथ्स की ट्रीटमेंट के बाद या 2 मंथ्स की ट्रीटमेंट के बाद यूजुअली 3 रिकमेंड की जाती है। जब दे दी पेशेंट को खाने को और आपने ले ली दवाई और फिर 3 महीने के बाद आप वापस चेक कराने आए तो फिर वो HbA1c करते हैं कि पता चल जाए कि आपकी ट्रीटमेंट कितनी अच्छी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। अब बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को ही कवर करता है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को कवर करता है, जिसमें क्योंकि आई एम फ्रॉम अकेडमिया नाउ, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, आई एम करेंटली वर्किंग इन कराची यूनिवर्सिटी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो academically the research is now being focused on evaluating the everyday nutrients that have different therapeutic activities that we can incorporate after testing in animals in the human research, जो कि फायदेमंद हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं दूंगी, हम अभी इसको आगे और कवर करेंगे कि हमने घर में हमारे अदरक, लहसुन, दालचीनी, धनिया, पुदीना, एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड ऑन डेली बेसिस, बट उसका इफेक्ट जो है किस तरह से या कितनी डोज में या किस फॉर्म में जो है वो एक डायबिटिक के लिए भी जरूरी है या एक डायबिटिक को फायदा दे सकता है,
इसके ऊपर अगर हम काम करें या इसके ऊपर जो काम चल रहा है वो बेसिकली मैंने इसमें इंकॉर्पोरेट किया ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में, ताकि अगर हम उसको उस तरह से यूटिलाइज कर सकें तो प्रॉपर इफेक्ट जो है वो आ सके। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी है, अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करते हैं, यानी कि प्री डायबिटिक है अभी, तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लान को प्रेफर करते हैं। दैट मीन्स द डाइट प्लान एंड द एक्सरसाइज। ठीक है, यूजुअली आपने सुना होगा, क्योंकि आजकल ये काफी ट्रेंड है, 1200 कैलोरी का प्लान, 1500 कैलोरी का प्लान, 1800 कैलोरीज का प्लान, यू नो, एंड you have different things in the breakfast options, in the, you know, a lunch meal, and then you can have some snack time, and then you have dinner time, और उसके अंदर आपको options दिए होते हैं कि you know इतनी calories इस चीज में है, and according to that you can select and prepare your meals and you know intake it ताकि आपकी balanced रहे। So diet plan हो सकता है। exercise, अगर आप देखें तो हर बीमारी के अंदर usually exercise जो है वो recommend की जाती है, and it is a very good thing, सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं, बहुत सारी हार्ट रिलेटेड कंडीशंस में भी, और वैसे भी अगर आप एक्टिविटी अपनी बॉडी की रखते हैं तो आप देखिएगा आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। एंजाइटी में भी इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि ठंडी हवा थोड़ी सी बाहर खाएं तो अच्छा एक जो है वो हो जाता है, चेंज आ जाता है, एंड यू नो यू गेट फ्रेश एंड एक्टिवेटेड। सो आपके पास यूजुअली नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस के अंदर फिजिकल एक्टिविटी, एज आई पॉइंटेड आउट, स्मोकिंग सेसेशन। स्मोकिंग सेसेशन में देखिए एक चीज तो ऑब्वियस है कि अगर कोई दिन में 16-20 या इस तरह सिगरेट्स पी रहा है, आप एकदम उसको नहीं कह सकते कि सिगरेट पीना बंद कर दें तो आप सही हो जाएंगे। और डेफिनेटली मेरा अपना मानना ऐसा भी है कि जिस चीज़ से आप किसी को मना करें वो चीज़ की क्रेविंग और होती है। जैसे अक्सर ये क्वेश्चन मेरे पास आता भी है, कंप्लेन भी करते हैं बहुत सारे लोग कि जो है जो जिन घर वालों को डायबिटीज है उनको हम जितना शुगर खाने से मना करें वो छुप के खाते हैं। So I usually answer that, you know, instead of telling them not to eat anything, for example, मैंगोज का जब सीजन आता है मेरे ख्याल से हर किसी को आम पसंद होता है, तो अगर आप खुद आम खा रहे हैं उनको मना करेंगे बिल्कुल आम नहीं खाएं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, वो फिर छुप कर ही खाएंगे। इट इज बेटर टू यू नो कंट्रोल इट। फॉर एग्जाम्पल, एक आम है, आप उस एक आम को 4 हिस्सों में डिवाइड करें और आप एक बोल के अकॉर्डिंग जो है वो उनको कह रहे हैं वो एक बोल खा सकते हैं। देन मैं ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में जैसे ही सजेस्ट करूंगी, जामुन has very good anti-diabetic activity, so you can suggest after eating that mango they can have, you know, 3 to 4 जामुन्स। तो उससे क्या होगा, आप अगर वो देके उनको करेंगे तो the sugar intake that they are taking, you need to calculate that, you know, that mango has how many calories that they are taking, and after they are taking that, you know, jamun with it, उसके बाद खाने के जब वो ले रहे हैं तो आप देखिएगा कि आफ्टर दैट व्हेन यू डू द 2 आवर्स रैंडम ब्लड शुगर, तो आप देखेंगे कि जो शुगर लेवल है वो काफी हद तक मेंटेन होगा। सो यू नो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि बिल्कुल नहीं खाना या स्टॉपिंग सच पीपल फ्रॉम ईटिंग, यू कैन यू नो क्रिएट सच अ प्लान फॉर देम दैट उनके कैलोरीज बैलेंस रहे, उनका इनटेक बैलेंस रहे, और अगर वो कोई अपनी पसंद की चीज खा रहे हैं तो फिर वो किसी दूसरी चीज पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें। बिल्कुल एकदम से आप किसी को भी कोई भी चीज सीज करने को नहीं कह सकते। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, विच इज अगेन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप किसी को ये बात बोलते हैं कि आपको कोई चीज हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो उसका एक अलग से ही स्ट्रेस जो है वो क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं कि डायबिटीज हो गई तो बस जिंदगी खत्म हो गई, और डेफिनेटली क्योंकि बहुत सारी मिथ्स भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल भी आ जाता है, तो उस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ये समझें कि दे कैन लिव देयर एवरीडे लाइफ प्रॉपर्ली, बट दे जस्ट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स, और इंशाल्लाह उसके बाद भी यू नो दे कैन हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी लिविंग, और द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल नॉट बी सो मच कॉम्प्रोमाइज्ड एज दे आर थिंकिंग। देन डेफिनेटली वेट लॉस करवाना पड़ता है, that is important. They have to control their fat and calorie intake, as I've said, and carbohydrate meals की स्पेसिंग और पोर्शन कंट्रोल या सर्विंग साइज कंट्रोल जो है वो अगर उनको समझा दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छी चीज जो है वो क्रिएट हो सकती है। आई एम टॉकिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी पॉपुलेशन पर्टिकुलरली, कि अगर बहुत सारे अच्छे अस्पताल वैसे प्लान प्रोवाइड भी करते हैं और पेशेंट को यूजली कहते भी हैं, एक कॉमन चीज जो पेशेंट से अब सुनने में आती है वो डिस्क शेप रोटी का कॉन्सेप्ट है कि जी डिस्क शेप रोटी हमें खानी है या खा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव कि उसकी डाइटरी मैनेजमेंट साथ साथ करना कितना इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि फार्मेसी के अंदर तो ये चीज़ नहीं आती, तो यू नो फार्मेसी इज वर्किंग
कोई भी जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोफेशन की, तो अकेला वी डोंट स्टैंड एनीवेयर. इफ वी वर्क इन द कोलैबोरेशन, या एक ट्रायंगल बना हुआ है, फिजिशियन है, देन यू हैव द फार्मासिस्ट एंड द नर्सेस. तो हमारे पास बीइंग फार्मेसी प्रोफेशनल्स बहुत सारी ऐसी कोर्सेज हैं जो इंटरलिंक्ड हैं. फॉर एग्जांपल, हम ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के अलावा फूड ड्रग इंटरेक्शन बता रहे होते हैं, हम हर्ब ड्रग इंटरेक्शन बता रहे होते हैं. तो जब हम इतनी चीज़ें बता रहे होते हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा सा डाइटरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझा दें, इफ देयर इज नो डाइटिशियन अवेलेबल, या हम उनको सिर्फ ये बोल दें कि आप फिजिशियन से बोल दें कि आपको कोई प्लान प्रोवाइड कर दें, या अगर उनके पास है और उनको कोई क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड, तो आप अगर थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर दें, तो डेफिनेटली दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑन द पेशेंट ऑफ आवर प्रोफेशन एज वेल. So these are some of the things, जैसे हम fruits, vegetables, usually wheat, bread, pasta, grains, olive oil, beans वगैरह डाइट के अंदर incorporate कर सकते हैं. फिश और सी फूड आप incorporate कर सकते हैं एटलीस्ट ट्वाइस पर वीक. उसके अलावा एग, चीज, योगर्ट मॉडरेट प्रोपोर्शंस में ले सकते हैं. मीट और स्वीट पर थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ता है, और वो फिर प्लान के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट हो सकती है. दिस इज जस्ट सैम्पल मेन्यू ऑफ 1800 कैलोरी हेल्दी ईटिंग प्लान विच यू कैन टेक. जस्ट एज आई सेड कि आपके जो है वो सर्विंग साइज पे डिपेंड करता है, और सर्विंग साइज को हमें बेसिकली ये फील करना है कि उनको भूख ना भी लगे लेकिन बहुत एक्स्ट्रा भी ना खा लें. सो यू कैन हैव अ ब्रेकफास्ट टाइम, देन यू कैन हैव अ स्नैक टाइम, देन लंच टाइम, देन अगेन स्नैक टाइम, देन डिनर टाइम, देन स्नैक. लेकिन आपको उसको कैलोरी वाइज जो है वो मैनेज करना है कि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के अंदर. इस पर जितना भी फोकस किया जाए कम है. अब ये देखिए, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेड हमेशा खतरे के निशान को बताता है. तो this is something that we can communicate to the patient that ये वाली चीजें हैं जिसको आपने अवॉइड करना है. फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स हो गई, टॉफीज हो गई, यूजुअली बेकरी प्रोडक्ट्स अगर आप समझ रहे हो जिसमें ज्यादा शक्कर है, या इस तरह की ऑयली स्टफ बहुत ज्यादा है, तो उसको आपने बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना. जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, सोडाज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एंड दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. जैसे अगर हम कहते हैं कि ब्राउन शुगर बेटर है एज कम्पेयर टू वाइट शुगर, इस तरह से बहुत जगह कहते हैं कि हनी से रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा हो रही है. तो दीज आर थिंग्स दैट शुड बी अवॉइडेड. Green is indicating basically the safe zone that they can take it as much as they want. For example, cucumbers हो गए, salads अगर आप देखें तो cucumbers हैं, onions हैं, लहसुन हैं, tomatoes हैं, the cabbage, both sorts of that, and then lady finger हो गई. करेला itself also possesses anti-diabetic, bitter gourd जो होता है करेला itself, it also possesses anti-diabetic properties, और इस पे बड़ा अच्छा काम भी हुआ है. तो अगर उसको डाइट के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स के इनकॉर्पोरेट करें तो उससे भी शुगर लेवल काफी हद तक अच्छा जो है वो हो सकता है. देन जो आपकी शिमला मिर्च होती है, द कैप्सिकम, उसके अंदर भी इनफैक्ट रिपोर्टेड है आपके पास एंटी डायबिटिक एक्टिविटी. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग गुड. अच्छा, हरे पत्ते वाली सब्जियों में आपको सुन के शायद हैरत होगी कि लेट्यूस और स्पिनच दोनों के अंदर काफी काम हुआ है एंटी डायबिटिक एक्टिविटी की बारे में, कि दे पोजेस सम एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज. बट देन अगेन, एज आई हैव हाइलाइटेड, मैं अभी ऑल्टरनेट मेडिसिन की जब बात करूंगी तो ये चीज हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंटल लेवल के ऊपर जो है वो एनिमल स्टडीज करके छोड़ी हुई हैं, और अब कुछ चीजें जो है वो प्रोग्रेस हो रही हैं टुवर्ड्स द क्लिनिकल स्टडीज, यानी कि उसको ह्यूमन डाइट के अंदर भी इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है. यानी कि अगर कोई डायबिटिक है और वो कोई दवाई खा रहा है और फिर वो दवाई के साथ इस तरह की डाइट लेके मैनेज कर रहा है जिसमें एंटी डायबिटिक एक्टिविटी रिपोर्टेड है बिकॉज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उससे फिर उसको कितना उसकी जो डायबिटीज है वो कितनी मैनेज होती है, कितनी बेहतर मैनेज होती है, या क्या उससे डोज रिडक्शन हो सकती है. तो ये चीजें बड़ी फिजिबल और अच्छी रहेंगी. येलो इज बेसिकली इंडिकेटिंग द मिड लेवल, यानी कि ये चीज आप एक मॉडरेशन में खा सकते हैं, मतलब मना नहीं है, खा सकते हैं. इसके अंदर अगर आप देखें तो आम है, शकरकंदी भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तली हुई थोड़ी सी चीजें भी हैं लाइक पकौड़े, या वो जैसे भी रमजान गुजरा था तो सबसे ज्यादा कंसर्न यही था कि ये चीज खा सकते हैं या नहीं खा सकते. तो उसमें जैसे एज आई सेड कि आप अगर बैलेंस करके यूज करें तो यू कैन डेफिनेटली टेक थिंग्स. यूजुअली मीट के अंदर ना हम ये एडवाइस करते हैं कि जिसमें फैट हो, जैसे जिस गोश्त के अंदर चर्बी वाला हिस्सा हो, अगर वो चर्बी वाले हिस्से को रिमूव कर दिया जाए तो देन दैट कैन बी कंज्यूम्ड.
मैंने जैसे भी आपको टाइप 1 डायबिटीज का बताया था थोड़ी देर पहले, तो टाइप 1 डायबिटीज में यू हैव डिफरेंट डेफिनेटली इंसुलिन प्रोडक्ट्स। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज डेफिनेटली यू माइट हैव गॉन ओवर दिस and this is not the main topic that I have to discuss, but definitely we have rapid acting as part of this pro. We have short acting, जिसके अंदर हमारे पास नोवो नॉर्डिस्क है, ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन है, एंड देन वी हैव द एनपीएच वाली बेसल इंसुलिन जिसमें हमारे पास प्रोटीन कंपोनेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट करके उसकी जो इफेक्ट है उसको बढ़ा दिया जाता है, एंड देन वी हैव दी बेसल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो कि यूजुअली हम बेड टाइम पे देते हैं ताकि अगली पूरी रात से अगली सुबह तक जो है वो यूजुअली इंसुलिन लेवल जो है मेंटेन रहे। और रैपिड एक्टिंग यूजुअली हम तब दे रहे होते हैं कि जब you don't know the plan। जैसे यूजुअली अगर मैंने कहा कि टाइप 1 के अंदर आपके पास टीनेज पॉपुलेशन या नीचे के यंगर एज के बच्चे होते हैं, सो इफ यू कांट प्रेडिक्ट व्हाट दे वांट टू ईट, so usually then rapid is very good for those things। short acting में usually आप half an hour पहले मील के दे सकते हैं। रैपिड इफेक्ट जो है वो अपना ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इन केस में where you think that the dietary plan might be indecisive or not known। और यूजुअली अब तो कॉम्बिनेशन में जा रहे होते हैं, जैसे रेगुलर एनपीएच वगैरह की कॉम्बिनेशन अच्छी है, रैपिड एक्टिंग और एनपीएच वगैरह की कॉम्बिनेशन अच्छी है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन लाइक दैट एज वेल। आई डोंट नो इफ यू नो दिस और यू डोंट, बट एक जमाने में इंसुलिन को इनहेलर फॉर्म में भी लाने की कोशिश की गई थी, but unfortunately it did not work out। FDA से अप्रूवल भी उसका हुआ था IVT, but उसमें मसला ये आया था कि डेफिनेटली बिकॉज इनहेलेशन से उसको ले रहे थे तो लंग एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स जो थे वो उसके बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से देन जो है उस पर वही हुआ। और अगर अब आप करंटली देखें तो बड़ा अच्छा काम नैनो पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो चल रहा है, और ट्रांसजर्नल वगैरह की चीज़ों के ऊपर अगर आप देखें तो चल रहा है, और बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रहा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें अब आप देखें तो दे आर गेटिंग अपग्रेडेड, ठीक है। तो उससे डेफिनेटली दिस इज अगेन वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट कैन अकर बेसिकली। अच्छा, अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट ड्रग ट्रीटमेंट, मेरा ख्याल से हर किसी को पता होगा या कॉमनली सबको मेटफॉर्मिन का नाम बड़ा अच्छे से आता है, और मेटफॉर्मिन के साथ सीटाग्लिप्टिन की कॉम्बिनेशन जाती है, या ग्लिमिप्राइड की कॉम्बिनेशन जाती है, या ग्लिपिसाइड वगैरह की कॉम्बिनेशन यूजुअली हमारे पास कॉमनली चल रही होती है काफ़ी। और डेफिनेटली they have different mechanisms that by which इंसुलिन सिक्रीटर गाउट्स यूजुअली वो कहला रहे होते हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, और दूसरी जो बाकी वर्क कर रहे होते हैं वो यूजुअली इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं कि दे ट्राई टू डिक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये आपके पास जो है कॉमन ड्रग्स जैसे सल्फेनाइल यूरियास हो गए आपके पास, क्लास 1 इतनी यूज नहीं होती, उसकी क्लास 2 यूजुअली कॉमनली जा रही होती है, ग्लिपिसाइड, ग्लावेंक्लामाइड, एंड देन बाइगोनाइट्स में मेटफॉर्मिन बहुत कॉमन है आपके पास, देन DPP4 इनहिबिटर में सीटाग्लिप्टिन बहुत कॉमन है। बट इफ यू हैव अ लुक एट द एडवर्स इफेक्ट्स और द कॉमन थिंग्स, तो मेटफॉर्मिन में ज़्यादातर लैक्टिक एसिडोसिस या GI सिम्टम्स बड़े कॉमन जो है वो पेशेंट के हो जाते हैं, और इसके अंदर जो है वो फिर मेटफॉर्मिन का एक ये भी मसला है कि अगर किसी का क्रिएटिनिन क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज है तो फिर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो है वो रिकमेंडेड नहीं होती मेटफॉर्मिन में, और मेटफॉर्मिन मैक्सिमम आप 2000 mg पर डे से ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जा सकते। मेटफॉर्मिन का एक चीज़ जो यूजुअली पेशेंट को काउंसिल करनी चाहिए और इससे बड़ा अच्छा इफेक्ट भी आता है। आई रिमेंबर पेशेंट वंस कंप्लेन टू मी, जैसे उन्होंने बताया, मैंने कम्युनिटी ट्रेनिंग्स काफ़ी कराई हैं और उसमें हेल्प भी की है। तो एक अंकल जो थे वो बहुत परेशान थे, वो ये बात बार बार कहते थे कि जब भी वो मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं तो उनकी गैस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ है, और वो डॉक्टर से भी बात करने आए थे कि जो है वो उसको चेंज करें इस वजह से। तो डॉक्टर उनको ये काउंसिल कर रहे थे कि उनकी शुगर बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, तो हो सकता है किसी और वजह से वो अपनी डाइट को जो है वो देखें इस चीज़ पर। तो मेटफॉर्मिन को मैंने उनसे पूछा वो कैसे ले रहे थे, तो ही वाज नॉट टेकिंग इट विद फूड, राइट। सो इफ यू यूजुअली टेक मेटफॉर्मिन विद फूड, यूजुअली द चांसेस ऑफ द GI associated symptoms they usually decrease।
तो थोड़ा सा फ्रॉम द फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव दैट काउंसलिंग द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे अगर आप उनको बताएंगे कि सल्फोनाइल यूरिया हाफ एन आवर बिफोर नहीं लेनी है, अच्छा ज्यादा असर आएगा या अच्छा इफेक्ट आएगा, तो ये चीजें पेशेंट को बहुत याद भी रहती हैं और ये चीजें पेशेंट के लिए बड़ा फायदा भी देती हैं कि अगर कोई इस तरह का साइड इफेक्ट आ रहा है तो ओनली अ फार्मासिस्ट कैन इवैल्यूएट एंड चेक आउट दैट व्हाट इज द इशू दैट इज अकरिंग एंड हाउ इट कैन बी ओवरकम। देन इफ यू हैव अ लुक, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जो हमारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें यू हैव different things that are going on with respect to the side effects. यूजुअली आपके पास जीआई साइड इफेक्ट्स जो है वो कॉमन रिपोर्टेड हैं एंड देन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन रिपोर्टेड है, कुछ के अंदर जैसे सीरियस डिसऑर्डर्स भी हैं, ग्लिटोजोन्स की अगर मैं बात करूं, और उसके अंदर फिर हेपाटिक डिसफंक्शंस भी बड़े कॉमन है। तो डेफिनेटली अगर एक बंदा ऐसा है जो मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ आ रहा है तो फिर उसको डायबिटीज की ट्रीटमेंट देते देते आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि साइड इफेक्ट्स जो है वो ट्रिगर ना हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स में भी ये कहा जाता है कि 3 महीने के बाद जो चेक कहा जाता है, जिसको यूजुअली पेशेंट्स बहुत अवॉइड करने की कोशिश करते हैं टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, वो बड़ा ज़रूरी होता है बिकॉज वो 3 महीने मंथली चेकअप से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं। तो इट इज़ गुड टू गो फॉर द 3 मंथली चेकअप और 6 मंथली चेकअप, उससे काफ़ी सारे मसले मसाइल सॉर्ट आउट हो सकते हैं। सो कमिंग टू माई मेन टॉपिक, I'll try keeping it short and winding up, and the conclusion and the foresight that I want कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हो, जिससे इंशाल्लाह सबको फायदा हो। ऑल्टरनेट यहाँ पे हम बेसिकली जो हाईलाइट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम अपने रिसर्च में, एज आई ऑलरेडी सेड, कि हम अपनी रिसर्च जो करते हैं वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देती है प्री क्लिनिकल ट्रायल में, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उसको आगे नहीं लेके जाते। बट अब जो सिनेरियो है वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता भी है कि वी आर मूविंग अ बिट बैक इन द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी अगेन the nutrients or the herbs that are available. मैं इसमें चाइना का ज़रूर जिक्र करूंगी कि जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी ये है कि वो उसको क्लिनिकल सेटिंग्स पे हॉस्पिटल सेटअप्स में भी जो है वो पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। एंड आप उनके बहुत सारे पेपर्स इस तरह के पढ़ेंगे कि वो अपनी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ भी अपनी चाइनीज ट्रीटमेंट देंगे। अगर आपने भी इनफैक्ट डायबिटीज को हटा के भी आप कोविड सिनेरियो में भी देखें तो दे हैव गिवन देयर ट्रेडिशनल चाइनीज ट्रीटमेंट, और उसके साथ उन्होंने बाकी ट्रीटमेंट को भी मैनेज किया है। एंड यू हैव रिसर्चेस ऑफ क्लिनिकल आउटपुट्स। सो क्लिनिकल आउटपुट का फायदा ये होता है कि फिर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी उससे फायदा उठा सकती है, ठीक है, एज अ होल। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो ये बेसिकली एक मैक्सिकन रिसर्च पेपर का है, क्योंकि मैक्सिकन ने इसके ऊपर स्टडी की थी। बट हमारे पास भी मिंट लीव्स के ऊपर जो है स्टडी हुई हुई है, बेसिल लीव्स के ऊपर हुई हुई है, लेट्यूस के ऊपर हुई हुई है, ऑरिगेनो बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ भी कर रहे होते हैं। और हम यूजुअली ऑरिगेनो जो है विद रिस्पेक्ट टू फ्लेवर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑरिगेनो की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी जो है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोकोनट की रिपोर्टेड है बहुत अच्छी, अनियन यानी कि प्याज जो हम यूज कर रहे होते हैं उसकी बहुत अच्छी है, पम्पकिन की है, गार्लिक की है हमारे पास, कस्टर्ड एप्पल जो हमारे पास होता है वो, गावा की जो है उसकी बहुत अच्छी रिपोर्टेड है। इनफैक्ट अगर आपने सुना हो तो भी जैसे आजकल फेरेंजाइटिस और लेरेंजाइटिस और the cough season is on because of winters. So इसके अंदर भी बहुत सारे the treatment options that have been worked on, that if you heat the gava on a pan for a few minutes and then take it, so dry cough उससे भी बहुत अच्छी relief होती है. So these are some of the things that are part of the daily dietary things that we consume, but how you consume them can change their effects. So this is pretty useful. Then you can see watermelon has it, मूली रेडिश के अंदर होती है, कॉर्न के अंदर, बीन्स के अंदर आपके पास जो है वो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं। और इफेक्ट्स जो पोस्टुलेट किए गए हैं और बहुत सारी जगह पे प्रूव किए गए हैं ड्यू टू द एक्टिव कंपोनेंट्स। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ऐड करना चाहूंगी, जो हम चाय पीते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी और कैमोमाइल टी यूज होती है, ये सारी टीज जो हैं ये भी एंटी डायबिटिक इफेक्ट रखती हैं।
So if somebody is consuming, for example, green tea twice a day, तो उससे भी शुगर का लेवल जो है वो मॉड्यूलेट या कंट्रोल हो रहा होता है. एंड इफ यू वांट यू कैन इवन चेक इट आउट कि वो भी जो है वो बैलेंस कर रही होती है आपकी जो शुगर की लेवल. सो टी, लेकिन अगेन इन मॉडरेशन. ऐसा नहीं है कि अब आप दिन में 5-6 कप ग्रीन टी के पीने शुरू हो जाए तो बजाय फायदा देने के वो कोई और चीज पे नुकसान कर दे, एंड देन यू से दैट ये इस तरह का आ गया था. It can affect the level of the free radical formation that we have. ठीक है, उसको डिक्रीज कर सकते हैं. ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, अपटेक को बढ़ा सकते हैं, इंसुलिन की तरह के मैकेनिज्म्स परफॉर्म कर सकते हैं और इंसुलिन की सिक्रीशन को भी बढ़ाते हैं. So all these plants that have been mentioned, all these nutrients that have been mentioned, they can act by this way and increase the effect of insulin in the body. So ये अगर आप देखें तो ये different concentration या doses हैं जिसके ऊपर animal studies जो है वो establish हुई हैं और उनकी anti diabetic activities जो हैं वो reported हैं कि ये ऐसा ऐसा जो है वो फायदा दे सकते हैं. And again, this is the levels along with the doses that have been reported कि जिनके ऊपर जो है वो काम हुआ है और जो है वो effect जो है वो दिया हुआ है. ये सारी चीजें again the doses that have been reported to have the effect. अगर आप देखें तो जो स्वीट पोटैटो के ऊपर स्टडी है वो क्लिनिकल टाइप की भी हुई है, 4 grams per day hypoglycemic effect, which is a very good thing. जैसे मैंने आपसे कहा कि अब बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो क्लिनिकल लेवल पे जा रही हैं और इनफैक्ट बहुत सारी अभी अच्छी रिसर्च स्टडीज पाइपलाइन में भी हैं जिसके अंदर नॉर्मल जो ट्रीटमेंट थेरेपी है जैसे मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन, उसके साथ में ये चीज को इनकॉर्पोरेट करके देखा जा रहा है कि क्या इफेक्ट आता है. एंड बिकॉज जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग यहाँ फार्मासिस्ट भी होंगे तो दे नो वी हैव टू आल्सो चेक दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज नॉट इंटरैक्टिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग्स दैट आर बीइंग टेकन. सो ये चीज को भी मॉनिटर करना चाहिए कि अगर साथ ले रहे हैं तो इफेक्ट ऐसा तो नहीं आ रहा. लेकिन बहुत सारी चीजें क्योंकि हम डाइट में नॉर्मली कंज्यूम कर रहे होते हैं तो usually it is postulated कि effect पूरा नहीं होगा. So this winds up my presentation. I hope it was useful for you guys. Thank you. Thank you so much, Dr. Sana. It was a very elaborative session. Especially पाकिस्तान में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उससे रिलेटेड आपने जैसे एक्सप्लेन किया. It was very elaborative and I hope कि सबने इस सेशन से बहुत कुछ जो है पाकिस्तान में काफी अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा. We have some questions for you, Dr. Sana, if I should start asking those questions. Yes, sure, beta. So there are actually people are mostly concerned, जैसे आपने बहुत सी examples दी कि क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए डायबिटीज में, और basically it was about the alternative approach, the non-pharmacological treatment. So some people are concerned about honey, that many physicians, they restrict honey in diabetic patients and some say it helps. And another question someone else asked, that if honey they should use raw or there is a special form that they should use. So it is actually about honey in diabetic patients. Hello, am I audible? Yes, yes. I hope you can hear me as well. See, as I said earlier, और मैंने उसको दिखाया भी, अगर आप देखें तो मैंने रेड जोन के अंदर हनी को दिखाया है. But I have put forward this thing that definitely honey की composition के अंदर आपके पास fructose, glucose, maltose ये सारी चीजें हैं. But if you're taking white sugar, instead of preferring white sugar, I would opt for honey. Okay, or instead of using white sugar, I would opt for brown sugar, a better alternative. ठीक है, तो यूजुअली अगर हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आए तो आप व्हाइट शुगर को अवॉइड करना पसंद करेंगे. पहला क्रॉस आता है ना वो हमेशा व्हाइट शुगर पे आता है. ठीक है, फिर डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल यू आर मैनेजिंग योर शुगर, if it is, for example, I say somebody's sugar is not being controlled or not being managed, so then the honey also gets crossed.
ठीक है, आप बात समझ रही हैं? जैसे आपने कहा जी कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है बेसिकली, क्योंकि व्हाइट शुगर तो आप क्रॉस सब में ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों पे कंप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों पे कंप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। अब अगर जैसे कोई अपनी डाइट बहुत अच्छी मैनेज कर रहा है और उसके अंदर दे थिंक दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग व्हाइट शुगर दे कैन जस्ट टेक अ टीस्पून ऑफ हनी, और वो उस टीस्पून ऑफ हनी से उनकी जो मैनेजमेंट चल रही है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, तो डॉक्टर उसको रेकमेंड कर देगा कि सही आप ले लें, कोई मसला नहीं है, आपके शुगर लेवल जो है वो बैलेंस चल रहा है। बट इफ incorporating that one teaspoon of honey is compromising their sugar levels, तो फिर वो डेफिनेटली रेड जोन जो उसकी हाईलाइट हुई है वो रेड जोन में ही रहेगा, वो उसको नहीं ले पाएगा। द सेम गोज फॉर, जैसे मैंने अभी शायद एग्जांपल मैं स्किप खजूर के लिए था, खजूर के लिए भी यही ऑप्शन जो है वो डॉक्टर्स यूजुअली ऑप्ट कर रहे होते हैं कि बिकॉज खजूर से भी आपकी बहुत ज्यादा एकदम से लेवल जो है वो ऊपर जाता है, तो दे यूजुअली टेल दैट आप लेके देख लें, और अगर उससे आपके शुगर के लेवल्स डिसबैलेंस हो रहे हैं तो देन यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर इट। लेकिन अगर उसको लेके आपका ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली आपके शुगर लेवल बैलेंस्ड में आ रहे हैं तो देन यू कैन टेक हाफ खजूर और वन खजूर। तो ये चीज बेसिकली यही वाली चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि जो प्लान है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसमें आपका शुगर लेवल और आपकी कैलोरीज और आपका इनटेक बहुत करता है, इसलिए प्लान जो है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। Sure. Thank you so much, Dr. Sana. If you allow, तो एक हमारे पास दो और questions हैं. If quickly, if you can answer them. Sure, sure. So it's actually because basically it's about the pharmacists in Pakistan that we have this platform and this collaboration. So would you like to elaborate? आप research आप एक farm sorry professor हैं, तो आप research से related आप बता सकती हैं, is research outreach programs and like research outreach programs and counseling by pharmacists in hospital and communities, are these the only ways that pharmacists can contribute towards lessening the diabetic ratio in Pakistan, or we have other ways as well? देखिए एक चीज जो सबसे ज्यादा काउंट करती है दैट इज रीचिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू रीच टू द पॉपुलेशन ओनली इन दैट वे कैन यू क्रिएट द अवेयरनेस इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक काम तो बीइंग अ फार्मासिस्ट हम अवेयरनेस क्रिएट करना कर सकते हैं, एंड आई बिलीव कि एजुकेटेड पीपल में अवेयरनेस क्रिएट करना इज कंपैरेटिवली इज वेरी इजियर एज compared to the uneducated population, and we do have that as well in our scenario, current scenario पाकिस्तान में ऐसा भी आपके पास है रेशियो। तो एक चीज तो जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आप अवेयरनेस सेशंस जो है वो करके अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं हॉस्पिटल में या कम्युनिटी में, कम्युनिटी इज एन एक्सीलेंट प्लेस where you can get in touch with the people, और कम्युनिटी फार्मेसी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही यही है कि व्हेन a patient is coming to you and you know that they are suffering from this particular condition, so you have an awareness and they can share their things with you, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर उसको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, उसको पूरा प्लान आउट कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप देखें कि इंटरनेशनली कम्युनिटी फार्मासिस्ट पे इतना ज्यादा एतमाद बैठा हुआ है लोगों का कि उनकी अगर वोटिंग भी होती है तो दे आर यूजुअली वोटेड एट द टॉप बिकॉज दे बिलीव दैट द फार्मासिस्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो हमारे पास अभी डेफिनेटली हॉस्पिटल ज्यादा प्रीडोमिनेंट है इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू कम्युनिटी, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी भी प्रोग्रेस कर रही है, एटलीस्ट जो पहले का सिनेरियो था 10 years बैक, द सिनेरियो हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो कम्युनिटी मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो है ना वो रोल प्ले कर सकती है, Best कम्युनिटी platform है, फार्मासिस्ट। बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसी को आगे लेके चलते हुए, like, do we have enough research evidence to support the fact that counseling done by pharmacists is impacting the diabetic ratio in Pakistan? If yes, then to what extent it is affecting the diabetic ratio, or we don't have any evidence yet? See, there are some studies that do focus on that, but unfortunately जैसे कि बहुत सारी चीज़ों का हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है अभी भी। अगर आप देखें तो रिसेंटली एंटीबायोटिक रिलेटेड डाटा जो है वो पाकिस्तान का अब उसके ऊपर टारगेट एंड फोकस जो है वो होना स्टार्ट हुआ है और रिलीज होना स्टार्ट हुआ है हमारे पास। तो इफ यू टॉक पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू काउंसलिंग इम्पैक्ट ऑन द डायबिटीज,
I don't think I have seen any such data yet that is being published, highlighting the impact of the community pharmacist. We do have, because we are associated with different training programs, and we, receive the feedback, and we see the patients also directly, with them. So, we have, compiled it somewhere, but unfortunately we haven't published it yet. So yes, but if such data come from different cities, so that would be very beneficial. डायबिटीज का रिसर्च ओरिएंटेड डाटा है, जो मैंने आपको कोट किया है अभी, जिसमें एक्सपेरिमेंटल के साथ साथ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और बेनिफिट जो है वो हुआ है, लेकिन डायबिटीज का पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू काउंसलिंग जो है वो भी डाटा हमारे पास impact का. So we have a room to work where pharmacists can put their efforts. Yes, definitely. With this, I'll just conclude the session. We are very grateful that we have that Give Back to Pharmacy in Pakistan and the Nurturing Community Pharmacy in Pakistan. They gave us an opportunity to extract knowledge from speakers like you, and we're very grateful to them. And for the audience, I would just like to ask them to stay tuned for other sessions, and they can always ask more questions. And we have a certificate with this link. They can just give us a feedback about the session, and with this feedback they'll be able to get the certificate as well. So we're very grateful for this session that was arranged by a collaboration of Give Back to Pharmacy in Pakistan with NCPP. So if you have more questions, you can still ask us. With that, Allah Hafiz, take care of yourselves, and thank you so much.